हेलो दोस्तों, पेनिया का ईएस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम आपके लिए लाए हैं नया टॉपिक। ये हमारी नई यूनिट है ज्योग्राफी की, दैट इज़ क्लाइमेटोलॉजी। तो इस यूनिट में हम देखेंगे डिफरेंट फिनोमिनास एसोसिएटेड विद क्लाइमेट्स। समझेंगे कि कैसे वेरियस क्लाइमेटिक फिनोमिनास होते हैं, जैसे जेट स्ट्रीम, टोर्नेडोज, ये सारे फिनोमिनास हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये वेदर और क्लाइमेट क्या होता है। आपने सुना होगा कि अपन बोलते हैं आज का वेदर बड़ा ख़राब है, आज लगता है बारिश होने वाली है। और आजकल क्लाइमेट चेंज, ये शब्द तो आप सुनते ही आ रहे हैं न्यूज़ में, हर जगह क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस वेदर एंड क्लाइमेट? The climate, it is the average atmospheric condition of an area over a considerable period of time. Over a considerable period of time. Minimum इसका अपन 30 साल का देखते हैं, 30 से 40 साल तक का देखते हैं। चेंज वेदर में चेंज आया है, कितना चेंज आया है मिनिमम पिछले 30 साल में। तो इसके बिना पर अपन डिसाइड करते हैं कि द क्लाइमेट हैज़ चेंज्ड एज वी हैव heard that the temperature of our atmosphere is increasing. Various conventions भी हैं, UNFCCC वगैरह, ये आप पाएंगे, environment वगैरह हम पढ़ेंगे। So climate is a average atmospheric condition of an area over a considerable period of time. लंबे समय के लिए देखते हैं कि atmospheric conditions क्या हैं। While weather is a day-to-day state of atmosphere. जैसे आज अपन बोलते हैं कि यार कल का मौसम सही था, आज बड़ी गर्मी है या बारिश है आज। सो वेदर चेंजेस कि हो सकता है कि सुबह वेदर कुछ और हो, दोपहर में कुछ और हो, सुबह धूप निकली हो, दोपहर में बारिश होने लगे। तो वेदर चेंजेस, इट इज़ अ डे टू डे स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। सो सबसे पहले देखते हैं एटमॉस्फेयर क्या है। जैसे ये अपना अर्थ है, तो इसके अराउंड this thick envelope of the gases surrounding the earth from all the sides is known as atmosphere. सपोज ये अर्थ है तो ये इससे भी बड़ा ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है। एंड दिस एटमॉस्फेयर इज अटैच्ड टू द सरफेस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। और इसी एटमॉस्फेयर की वजह से लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे। एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ सपोर्ट्स लाइफ। सो व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ दिस एटमॉस्फेयर? तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में वेरियस गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, जेनॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो वेरियस गैसेस आते हैं। तो समझते हैं, देखते हैं कि क्या क्या कितने अमाउंट में हैं these gases in the atmosphere. पहले atmosphere, it is a thick gaseous envelope which surrounds the earth from all the sides and is held together or attached to the surface because of this gravitational force. So this is the definition of atmosphere. Then we come on the composition of the various gases in the atmosphere. First, nitrogen is 78.08%. Then come oxygen, 20.95%. Then argon, 0.93%. Then carbon dioxide, 0.036%. Neon, 0.2%. Helium, 0.005%. Krypton, 0.001%. So these are the various gases in the atmosphere. And some amount of water vapor, dust particles are also included in our atmosphere. यहाँ पे लिख देते हैं प्लस वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स। तो वाटर वेपर क्या है? वाटर वेपर इज सिंपली गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इज वाटर वेपर। टिपिकली आप अननेकेड आई से वाटर वेपर को नहीं देख सकते। और वाटर वेपर बनता कब है? जब वाटर इवेपोरेट्स होता है, टर्निंग द लिक्विड इनटू गैस, तो वह वाटर वेपर फॉर्म होता है। दिस प्रोसेस अकर बिकॉज ऑफ द हीट इवेपोरेशन
and this water vapor is responsible for all the weather phenomena in our atmosphere. जितने भी वेदर फिनोमेना हो रहे हैं एटमोसफेयर, रेन, हेल, शीट, बाकी जितने भी वेदर फिनोमेना हैं सारे रिस्पॉन्सिबल हैं बिकॉज ऑफ दिस वाटर वेपर. वाटर वेपर इज द ग्रीन हाउस गैस. इट ट्रैप्स द हीट्स रिलीज फ्रॉम द अर्थ. ये भी हम क्लाइमेटोलॉजी में समझेंगे इन आवर टॉपिक इंसुलेशन. इट इज़ ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस. Water vapor proportion varies with time as well as from region. Like equator, equator region is high water vapor content. It can be as high as 4% of the air. In tropics, water vapor content is less in the air. So proportion varies with time as well as region. And then 99% of water vapor is concentrated in the lower 16 kilometers of the atmosphere. Above 16-17 kilometers, we cannot find this water vapor. It is concentrated in mainly lower layers of the atmosphere. Other cases we can find above 16-17 up to 400 kilometer also some cases, but we can't find water vapor above 16 kilometer. Then dust particles, धूल देखते हैं आप गर्मियों में. The local wind of our India is लू. जब लू चलती है तो अपने साथ मिट्टी भी ले जाती है, क्योंकि मिट्टी में नमी कम होती है. तो बिकॉज ऑफ हाई स्पीड विंड्स ये मिट्टी उन विंड के साथ इरोड हो जाती है. डस्ट पार्टिकल. These dust particles act as a hygroscopic nuclei. It help in condensations and cloud formation. हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया की तरह काम करता है. जैसे डस्ट पार्टिकल है अपने एटमॉस्फेयर में, तो इसके अराउंड वाटर वेपर एक्यूमुलेट हो जाएगा और which also causes precipitation and cloud formation. Dust particle is also concentrated in the lower layers of atmosphere and their concentration varies from region to region as well as with respect to time. ड्राई रीजन में ज़्यादा डस्ट पार्टिकल कंटेंट होगा एज़ कम्पेयर टू द रीजन जहाँ पे थोड़ी नमी होगी हवा में या जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती हो, वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स हवा में कम होंगे ऑब्वियसली. सो लेट्स सी एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर देखते हैं एटमॉस्फेयर का. सो दिस अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू हेट्रोस्फेयर एंड होमोस्फेयर. ये क्या है? सपोज this is one layer around the earth, this is another layer, and this first layer we call as homosphere and this second layer is known as heterosphere. Homosphere and heterosphere, what is the difference between the two? This homosphere extends up to 80 kilometers, while heterosphere extends up to 6,400 kilometers until the edge of the Earth atmosphere. This heterosphere extends up to 6,400 kilometers. This homosphere is a zone of uniform mixing. मतलब सारी गैसेस इसमें मिक्स रहती हैं कि ऑक्सीजन भी है, वाटर वेपर भी है, CO2 भी है, नाइट्रोजन भी है, हीलियम, क्रिप्टॉन, सारी गैसेस मिक्स रहती हैं इन दिस लेयर ऑफ होमोस्फेयर. सो दिस इज़ अ लेयर ऑफ यूनिफॉर्म मिक्सिंग. वाइल इन हाइड्रोस्फेयर देयर आर सेपरेट लेयर ऑफ द गैसेस. लाइक कि मान लो ये है पहली लेयर नाइट्रोजन लेयर, देन सेकेंड लेयर इज ऑफ ऑक्सीजन, then helium, hydrogen. So it is separate layer of the gases. While in homosphere, all the gases are combined. In homosphere, we can find the water vapor, but in heterosphere, we cannot find water vapor. Completely, water vapor is absent in heterosphere. So this is the differences. थोड़ा लिख लेते हैं difference. Homosphere and हेट्रोस्फेयर. तो दोस्तों पहला डिफरेंस है होमोस्फेयर एंड हेट्रोस्फेयर में कि होमोस्फेयर
एक्सटेंड अप टू 80 किलोमीटर। अर्थ से 80 किलोमीटर की हाइट तक होमोस्फेयर एक्सटेंड करती है, 80 किलोमीटर। while this heterosphere extends beyond 80 kilometer till the spaces begin, beyond 80 kilometer till outer spaces begin. Then this homosphere is a zone of uniform mixing. All the gases are mixed together. While in heterosphere there are separate layer of gases, जैसा कि आपने देखा था, that nitrogen has separate layer, oxygen has separate layer, helium has separate layer, so like this. Then in homosphere gases are in molecular form. While in heterosphere gases are in atomic form. अभी molecular और atomic form क्या है? So in molecular form, two gases or two atoms are combined together, like hydrogen plus oxygen form H2O and a CO2. These are molecular form of gases, while single atom like hydrogen, carbon, oxygen, it is atomic form. In heterosphere we got atomic form of gases. Fourth differences, in homosphere there is a presence of water vapor and dust particles. Water vapor and dust particles are present in homosphere, while in heterosphere these are almost absent. So these are the difference between the homosphere and heterosphere. अब हम देखेंगे different layers of the Earth's atmosphere, like troposphere, stratosphere, exosphere, ये सब क्या हैं. So let's see. This is Earth. The first layer is troposphere, then stratosphere, and stratosphere we have ozone. Then third layer is mesosphere, then thermosphere, then exosphere. तो ये क्या है? तो सबसे पहले हम आते हैं ट्रोपोस्फेयर पे. Troposphere is the lowest layer of the Earth's atmosphere, extending from the surface up to 8 to 15 kilometer of the height. It's troposphere is the layer where all the weather events such as cloud formation, storms, all these weather events occur in the troposphere. So why this height varies of troposphere, that 18 to 15 kilometer. So let's see. This is Earth. This is troposphere. Troposphere height is greater at the equator. It's about 16 to 18 kilometer, while it is lower in the poles, like 5 to 8 kilometer. So this is the structure of the troposphere. It is close near to the poles and far near to the equator. So their height varies. And the 75% of all the gases are present in the troposphere, lower layers of the Earth, all the gases are present. Troposphere is also called a zone of turbulence and convections. So what is this turbulence and convections? Turbulence word आपने सुना होगा कि एयरक्राफ्ट नेविगेशन में turbulence in the flight. What is this turbulence? As the convection is restricted to troposphere. What is this convection? Convection is the upper movement of the air. Upward movement of the air is known as convection. Convections की वजह से ही वाटर वेपोरेट होता है, कन्वेक्शन की वजह से ऊपर जाता है, फिर वो प्रेस ठंडा होकर ऊपर से बारिश होती है, तो इट इज़ नोन एज precipitation, and this rainfall is known as convection rainfall. And because of this convection, air move upwards. Air upward move कैसे करती है? Near to the surface, air absorbs heat and expand. It's led to the rise of the air.
फॉर्म सरफेस एयर राइसेस। तो कन्वेक्शन कुछ इस तरह होता है कि एक पार्ट ऑफ द अर्थ पे एयर राइज करती है एंड द अदर पार्ट एंड ऑन द अदर पार्ट इट सबसाइड्स। तो इसकी वजह से वी फील turbulence in the atmosphere because of the rising and submergence of the air. It is our troposphere is a zone of turbulence and convection. In winter, troposphere height at mid latitude is 12.5 kilometer, while in summer it is 15 kilometer. तो average height है 13 kilometer. ये भी होता है because of the convection. Winter and winter मतलब एयर इतना ज़्यादा राइज नहीं करती है. So tropopause height is nearly 12.5 kilometer, while in summer air rises to the height of 15 kilometer. And this is our troposphere. And the next layer of the earth is stratosphere. So what is this stratosphere? Stratosphere is the layer of the earth above the troposphere. The second layer of the earth is known as stratosphere, extending from 15 to 50 kilometer. 15 kilometer. The part where troposphere ends is called as tropopause. इस ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है. जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे द टेम्परेचर इंक्रीज विद एल्टीट्यूड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर. ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स द हीट, it absorbs ultraviolet radiation from the sun. So in this layer the temperature starts to increasing, while in a troposphere temperature decreases at the rate of 6.5 degrees Celsius with the increase in height. जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर गिरता जाएगा 6.5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से ट्रोपोस्फीयर में, जबकि स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है. द टॉप ऑफ ट्रोपोस्फीयर को हम स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं. तो 50 किलोमीटर तक हो गया स्ट्रेटोस्फीयर. देन बियॉन्ड स्ट्रेटोस्फीयर द थर्ड लेयर इज मीसोस्फीयर. मीसोस्फीयर इज एटमॉस्फेरिक लेयर अबव द स्ट्रेटोस्फीयर. मीसोस्फीयर एक्सटेंड करती है 50 से 85 किलोमीटर तक, 50 to 85 किलोमीटर द हाइट ऑफ मीसोस्फीयर. In mesosphere, temperature start to decreases. Temperature decrease in mesosphere with altitude, and the mesosphere is that layer where meteoritic burns. All the meteorites coming to starts burn in this layer upon entering the Earth's atmosphere. Mesosphere is the layer which achieves the lowest temperature in the atmosphere. The lowest temperature in the atmosphere is observed in mesosphere. So this is our third layer. Then there comes fourth layer, that is thermosphere. The thermosphere is the layer of the earth above the mesosphere. Thermosphere extends from 85 kilometers up to exosphere. 85 to nearly 650 or 700 kilometers from where the exosphere began. So 85 to 700 kilometers this thermosphere extends. This thermosphere is characterized by significant increase in the temperature with altitude. Because of the absorption of the solar radiation, temperature increases in the thermosphere. Thermosphere consists of lower nitrogen and upper oxygen layer. Thermosphere is the layer from where heterosphere starts, and the first layer is, and the heterosphere is nitrogen layer, and the second is oxygen layer, then helium, then hydrogen layer. So this is our thermosphere. Then there comes the last layer, that is exosphere. Exosphere is the outermost layer of the Earth atmosphere, starting at an altitude of 700 kilometers and extending up to the space. And to the space this exosphere extends. This exosphere is the layer where the atmosphere gradually transition into the vacuum or outer space. The density of the particle in the exosphere is extremely low. Density is extremely low. The particles are arranged far away from each other like this with low density. So these are the various layers. There is one more layer, that is ionosphere. Ionosphere is the layer where all the radio waves got reflected from the ionosphere. Ionosphere helps in the radio communication like this. This ionosphere reflects the radio waves onto the larger part and helps in communication. So the height of ionosphere is 80 to 650 kilometers. It lies in thermosphere.
This ionosphere is made up of different layers of ions like D, E, F, G, various other ions that are there in ionosphere and helps in radio communication. S, short wave reflected back to the Earth surface. Then what is this Kármán line? This Kármán line. The Kármán line is the boundary where outer space begins. It is at 100 kilometers from the sea level. As you can see, in between the mesosphere and thermosphere, there is a Kármán line. The height is 100 kilometers above the sea level. This Kármán line is the line which is agreed for aircraft navigation. As beyond this Kármán line, the air is too thin. It is too thin for normal aircraft. Normal aircraft cannot fly beyond this Kármán line. Let's see the temperature difference in different layers. As you can see, in the troposphere, first gradually the temperature decreases. As we come in stratosphere, there is a constant temperature, then temperature start to increase till stratopause because of the presence of ozone layer. Then in mesosphere, the temperature again start to decrease. Then in thermosphere, the temperature increases. Friends, this is for the today's class. I hope the class is productive for you. Thank you.